Hello and assalamu alaikum guys. Today we're gonna be doing O-Level Physics 5054 May June 2022 Paper 1 Variant 1. Before starting मैं आपको आपके एग्जाम के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स दे दूंगा and our topical past papers which is a very convenient way to learn. Firstly, about your exam. Your exam will contain 40 questions and each question will be 1 mark. जैसे अगर आपने इस question को correctly attempt किया है, the reward for that will be 1 mark. ठीक है ना? The total mark for this paper is 40 marks and you have to attempt all the questions. Unlike P2, you have to attempt all the questions in this paper. You will be given 1 hour to attempt this paper and on average आपके पास होंगे 1 minute and 30 seconds for each question. मतलब ना ही आपने क्वेश्चन ज्यादा तेजी से करना है ना ही आपने ज्यादा आराम से करना है. Like it is a more than enough time to solve 40 questions. But on the other hand, on the contrary, it is also very a very less amount of time, right? It all depends on how you pace it. ठीक है? So yeah, moving on to our topical past papers. Our topical past papers are just like any other past papers, but the edge we have over the other past papers is that for every topic there will be a specific QR code. जैसे अगर आपने अपना टॉपिकल पास्ट पेपर्स की बुक खरीदी है, राइट, हमारी तरफ से, दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ रेडियो एक्टिविटी. तो यहाँ एक साइड पे क्यूआर कोड होगा और अगर आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे, क्यूआर कोड लुक्स लाइक दिस इफ यू वर वंडरिंग व्हाट अ क्यूआर कोड इज. So a QR code which looks like this, you will have to scan it and it will lead you to a YouTube playlist from which you can solve the past papers for radioactivity. The topical past papers. Usually जो teachers होते हैं, they only upload yearly past papers. But हमने एक नया initiative लिया जिसपे हम topical भी upload करें और yearly भी upload करें. So yeah, that is a very good initiative. आपको अपने दोस्तों के साथ, अपने मतलब peers के साथ, सबके साथ share करें. एंड इट विल लीड यू टू अ प्लेलिस्ट ऑन हाउ टू सॉल्व दैट टॉपिक्स क्वेश्चन. ये आप देख सकते हैं रेडियो एक्टिविटी क्या है. इफ यू लाइक अगर आपने हमारी पीटीयू की किताब खरीदी है और उधर एक आपने रेडियो एक्टिविटी पेपर 2 का फ्रंट पेज खोला है, आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा और क्यूआर कोड को आप स्कैन करोगे, इट विल लीड यू टू अ प्लेलिस्ट. प्लेलिस्ट में 23 वीडियोस है. 23 वीडियोस हर क्वेश्चन को थोड़ली एक्सप्लेन कर रही है, ठीक है ना? सो नो नीड टू वरी फॉर दैट. So yeah, that is it for the introduction. Let's move on to the questions. Question number one. The diagram shows the resultant R of a 3 Newton force and a 4 Newton force that act at a point P. The angle between the 3 Newton force and the 4 Newton force can be of any value from 0 to 90. Which value of R is not possible? So what they're actually saying is that जो 3 न्यूटन का फोर्स है और 4 न्यूटन का फोर्स है उसके बीच में जो एंगल बन रहा है that can be of any value from 0 to 90. मतलब ये जो एंगल है that can be 0 to 90. मतलब in one case जो एंगल है that can be like this and in the other case the angle that can be like this in the same direction because the angle is 0 degrees. ठीक है ना? So that is what they're saying. They are asking कि कौन सी वैल्यू है which is not possible. वही वैल्यू होगी which will lie below or above this limit. Let me tell you one more thing. जो 0 डिग्रीज है ना उस पे जो एंगल है that would be different और जो 90 डिग्रीज है उस पे जो एंगल है that would be different as well. है ना? 0 डिग्रीज पे जो एंगल होगा, I mean the resultant force, that would be something like this. And when the forces act in the same direction, what happens is that they add up. जैसे you can see this. 30 न्यूटन का फोर्स एक डायरेक्शन में ऐड कर रहा है, उसी डायरेक्शन में 15 न्यूटन का फोर्स भी ऐड कर रहा है. दैट मीन्स दैट द रिजल्टेंट फोर्स इज 45. तो समथिंग लाइक दैट जो 4 न्यूटन का फोर्स है और 3 न्यूटन का फोर्स है, व्हेन देयर इज 0 डिग्रीज बिटवीन देम, they will be in the same direction, and when they have the same direction the forces will add up which will become 7 newtons. अब हम निकाल लेते हैं कौन सा फोर्स आएगा एट 90 डिग्रीज. 90 डिग्रीज पे this would look something like this, है ना? 90 पे ये इस तरह का होगा, ठीक है? एंड देन ये 3 न्यूटन्स, 4 न्यूटन्स हो गया नीचे, 3 न्यूटन्स हो गया ऊपर. लेट्स अप्लाई द पैरेललोग्राम मेथड. एक्चुअली इट्स नॉट अ पैरेललोग्राम एनीमोर, इट इज जस्ट अ रेक्टेंगल. ठीक है ना? सो इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस. एंड एज वी नो फ्रॉम द पैरेललोग्राम मेथड, आपने एक लाइन एक्सटेंड करनी होती है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
to the end of the parallelogram, and this will be our resultant force. तो resultant force हम कैसे निकालेंगे? Anyone with a even a little bit of a brain would know कि जो ये है and ये है, that would be the same because they are in the same direction and parallel to each other, है ना? So they would be the same. So ये जो 3 newtons है, this would be 3 newtons as well, right? And since this is making a 90 degrees ka angle, that means that we can easily apply the Pythagoras theorem and calculate this line, which is the resultant force. So Pythagoras theorem states that hypotenuse square is equals to 3 square plus 4 square, है ना? So 3 square हमारे पास क्या होता है? 3 square is 9 plus 4 square हमारे पास होता है 16, which is 25. लेकिन अभी हमने 25 का क्या करना है? अंडर रूट लेना है. 25 अंडर रूट होता है 25 का, that is 5. 5 newtons will be the force when the angle is 90 between them. When the angle is 90, the force which will be calculated will be 5 newtons. So जो हमारे पास maximum force था that was 7 newtons और जो हमारे पास minimum force है that is 5 newtons. तो 5 से 7 के बीच में जो भी वैल्यूज आएंगी that would be correct. और जो उसके बाहर होंगी या जो उससे ऊपर होंगी या जो उससे नीचे होंगी, those values will be incorrect. So as we can see, 7 is the correct answer. 6 will be a correct answer as well because it lies between 7 and 5. 5 would be a correct answer as well. So the only wrong answer, matlab in this context, the right answer, because they are asking for the option which is not possible, will be A, which is 4 newtons, which is below 5 newtons. Therefore, it is wrong. What is measured using a micrometer? Using a micrometer, we can measure area? No. We can measure current? No. We can measure length. That is the correct answer क्योंकि micrometer screw gauge से आप सिर्फ length measure कर सकते हो and a very small length. As you can see here, the example micrometer screw gauge is measuring 0.562 centimeters. So that is indeed a very small length. Question number 3. The graph shows a short journey. It is a speed time graph. The speed time graph हमें क्या देता है? Speed time graph gives us the speed, of course. It gives us the distance with the area under the graph. And what else does it give us? It gives us the acceleration with the gradient. So what is the greatest speed reached? So speed, of course, this is the easiest question out of them all. The speed is mentioned on the y-axis. Y-axis पे जो highest point है, that is 3. Therefore, this is the highest speed reached. So question number 3 का आंसर है C. Question number 4. Car of weight 11,000 Newton moves with a constant velocity along a horizontal road. A driving force of 5,000 Newton acts on the car. What is the force opposing the motion of car? So मैंने ये diagram पकड़ा इंटरनेट से, and as we can see, the forward motion is 5 newtons and the backward is 5 newtons as well. It is a car with constant velocity. ठीक है ना? And how do I assume that? That is because they have mentioned that the car has a constant velocity. Whenever an object is in constant velocity, the forward force is always equal to the backward force. ठीक है ना? क्योंकि अगर इसके पास एक resultant force होता, what would happen is that the car would decelerate or accelerate. समझ आ गई? So the resultant force is of course zero, and the object stays in constant velocity. The forces are balanced out. So a driving force of 5,000 Newton, that means that the frictional plus the air resistance is equal to 5,000 Newton as well, which is the backward force. Question number 5. A man with an open parachute falls to earth at a constant speed. The following act. P. Upward force of the parachute on the man. Q. The upward force of the man on the earth. R. The downward force of the earth on the parachute. S. The downward force of the man on the parachute. Man on the parachute. Which two forces are a Newton's third law pair? Acha, what is the Newton's third law? The Newton's third law states that for every action, there's an equal and opposite reaction. समझ आ गई? For every action, there is an equal and opposite reaction.
तो हमने एक ऐसी पेयर ढूंढना है जो ये दोनों कंडीशन से कंप्लाई करे। तो P एंड S हम देख सकते हैं, हमें दो पेयर्स नजर आ रहे हैं इसमें। द अपवर्ड फोर्स ऑफ द मैन ऑन द अर्थ, द डाउनवर्ड फोर्स ऑन द मैन ऑन द पैराशूट। अच्छा ठीक है। What it seems like is P and S is the perfect pair. The upward force of the parachute on the man and the downward force of the man on the parachute. So they seem like opposite in direction लग रहे हैं हमें, and they seem like the same in magnitude. ठीक है ना? So C is the right answer. Question number 6. A box is pulled up a rough slope as shown. In which direction does the friction act on the body? Friction will always be in the opposite direction of the movement. The friction will always act opposite opposite to the direction in motion. As you can see, ऊपर गाड़ी भी बनी हुई है, गाड़ी का जो ड्राइविंग फोर्स है, it is pulling the car forward, but the friction is pushing the car backwards. फ्रिक्शन जो लग रही है, it is between the tire and the road. ठीक है ना? So खुद आप सोच के दिखाएं कि where would the frictional force be? It would be in the direction D. Question number 7. The diagram shows a motorcyclist leaning over in order to turn the corner to the left. Which force causes him to turn? The force will be the centripetal force. Acha ji, let me state one more thing. Whenever an object is moving in a circular path, it is always subjected to centripetal force. ये सब बच्चों को बताना चाहिए बिकॉज दिस इज द मोस्ट रिकरिंग क्वेश्चन, दिस इज द मोस्ट रिडंडेंट क्वेश्चन। ठीक है ना? हर बच्चे को ये आंसर आना चाहिए। ठीक है ना? तो एज वी कैन सी बाय हिज मोशन, इसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ही लुक्स लाइक गोइंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन which is in a circular path because they have told us it is a corner to the left. And of course, the centripetal force always acts towards the center of the direction of path. मतलब अगर for example the motorcyclist is here and it is turning in this direction, like left turn कर रहा है ना? So the force will always act towards the center. The centripetal force will always act towards the center. The resultant force will always be towards the center. So yeah, question number 8. Which type of force causes the Earth to orbit the Sun? This is by far the easiest. Elastic. That does not make sense. Electrostatic. Gravitational. Easiest question. Like the major thing which is keeping the whole universe together, like not literally, but in the senses of keeping a huge cluster of things together, that would be called the gravitational force. जैसे हमारे अर्थ है, उसको हमने वो सन के अराउंड क्यों वो करता है, रोटेट करता है, बिकॉज इट इज इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द सन। जैसे हमारा हो गया मरकरी विच इज अहेड ऑफ अर्थ, मरकरी हो गया, दैट इज आल्सो इन द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है ना? और हमारे पास हो गया मरकरी के बाद वीनस आता है, वीनस के बाद अर्थ आता है। ठीक है ना? अर्थ आ गया हमारे पास, सारे जो प्लैनेट्स हैं दैट आर इन द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द सन. So that is a very easy question. Let's move on to the question number 9. Four objects on a of different masses are on different planets. Different planets में है. The weight of each object on its planet is determined. Which object is on the planet with the smallest gravitational field strength? So gravitational field strength कौन से फॉर्मूला में, ऐसे फॉर्मूला में इंक्लूड होता है जिसमें हमारे पास मास भी होता है और वेट भी होता है? That is the formula known as weight is equals to mass into gravitational field strength. ठीक है ना? So what is our weight? हमने gravitational field strength निकालना है, तो we will make the
gravitational field strength the subject, right? So in order to make something the subject, we have to put that thing in one corner और बाकी सारी चीजें आपने दूसरी कॉर्नर में डाल देनी है, इक्वल्स टू के दूसरे साइड पे डाल देनी है। तो मैथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। एंड विल डू दैट फॉर एवरी सिंगल ऑप्शन। ए के लिए देख लेते हैं। फॉर ए मैथ है हमारे पास 5 और वेट है 125, 125 डिवाइडेड बाय 5 will give us an answer of 25 न्यूटन पर किलोग्राम। अच्छा बी के लिए देख लेते हैं। बी में हमारे पास है 150 as the weight and for the mass we have 15, so that would be I think 10 न्यूटन पर किलोग्राम। अगला हम सी देख लेते हैं। फॉर सी we will have 220 divided by 20 because weight ऊपर है mass नीचे है, that will give us 11 न्यूटन पर किलोग्राम। एंड फाइनली डी, डी के लिए हमारे पास है 225 divided by 25, that will give us an answer of 9 newtons per kilogram. So what is the smallest gravitational field strength? That is of course D. आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, which physical quantity does not change with a piece of copper is heated? Whenever a solid is heated, जब भी एक solid heat होएगा, the particles in that solid will vigorously vibrate. And whenever the particles in a solid vigorously vibrate, it will cause thermal expansion. Thermal expansion क्या करेगा? For example, this is the original volume of the solid. When it is heated, it will expand just a tiny bit. ठीक है ना? It will expand just a tiny bit. So which of the quantities do not change? The temperature will of course change whenever an object is heated. Of course, the temperature will change. Volume, volume will always change as well because it is thermal expansion, right? जो volume है इसका that is changing. जैसे कि यहाँ पहले था when it is heated it will expand a bit. ठीक है ना? Very minor expansion but there is still a change in volume. The mass will not change. The mass, why will the mass not change? Because the mass is not affected by the changing volume. The density is affected. The density will change because the density is equals to mass divided by volume. ठीक है ना? The density is equals to mass divided by volume. हमारे पास mass है fixed. The volume is changing, है ना? mass तो हमारे पास fixed है. The volume is changing. Therefore, the density will de- decrease. Yes, it will decrease. So let's move on to question number 11. A single metal bolt has a mass of 34 grams. Three of the bolts are immersed in a measuring cylinder that contains 30 centimeter cube of water. The reading on the measuring cylinder rises to 42 centimeter cube. What is the density of the metal? So first of all, before me explaining everything that I drew here, आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि what the formula for density is. जो फॉर्मूला हम टिपिकली यूज करते हैं डेंसिटी के लिए इज डेंसिटी is equals to mass divided by volume. So what does this tell us? We will need to calculate two values. One will be the mass and the second one will be the volume. ठीक है ना? First of all, let's calculate the mass, which is pretty easy. They have told us that one of the metal bolt is equals to 34 grams. So one metal bolt is equals to 34 grams and there are in total three metal bolts. हमारे पास तीन metal bolts है और एक metal bolt है that is 34 grams. So if we multiply 34 by 3, will we get the total mass? Yes, we will, which is 102 grams. समझ आ गई? एंड सिंस आप क्वेश्चन के आंसर्स में देख सकते हो कि दे आर रिक्वायरिंग एन आंसर इन ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, तो हम उसी के हिसाब से जो हमारे पास मेजरमेंट्स होंगी, वैल्यूज होंगी, उसी के हिसाब से लेंगे. वी डू नॉट नीड टू हैव टू लाइक कन्वर्ट दिस इनटू किलोग्राम्स. सो या हमारे पास एक आ गई मास की वैल्यू. नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू फॉर द वॉल्यूम. वॉल्यूम की हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? व्हाट डू यू कॉल इट? वैल्यू that will be calculated using the simple phenomenon called displacement of water. आप फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक वाटर जाग गया, उसके अंदर आप बर्फ डाल रहे हो, तो बर्फ जब डालोगे द वाटर विल राइज. सो जस्ट लाइक दैट अगर आप वाटर के अंदर वो डालोगे, बोल्ट्स डालोगे, द वाटर विल राइज. सो हमने इनके डिफरेंस देखना है. व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम्स
और डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं? बाय सब्ट्रैक्टिंग देम. So 42 minus 30 will be equals to 12. So 12 centimeter cube of volume is occupied by the bolts. So now we just have to put in the values. 102 divided by 12, which is the volume. Mass divided by volume will give us the density, which is 8.5 grams per centimeter cube. As easy as that, which is D as the right answer. एक सेकंड बस इसको मूव कर देते हैं ऊपर, so that we have more space. अगर आपने इसको देखना है सही तरह से, you can take a screenshot here. Anyways, let's move on. Question number 12. A rocket of mass m, capital M, when empty carries a mass m of fuel. The rocket and fuel travel at speed v. The engine of the rocket is fired and all the fuel is expelled. The speed of the rocket increases to 2v. What happens to the kinetic energy of the rocket? काइनेटिक एनर्जी मैं आपको देखते ही बता सकता हूँ, या किसी बच्चे ने मतलब एक्सपेंसिवली पढ़ा हो ओ लेवल्स को, वो देखते ही बता देगा. व्हेन द वेलोसिटी इज डबल्ड द काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 4. हाउ यू मे आस्क? लेट मी एक्सप्लेन इट हियर. अच्छा, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी 1 है. हम इसका सिंपली फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं. 1/2 m. मास m है, velocity square, which is v square as they have given us. ठीक है ना? That is simply 1/2 mv square. जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी 2 है, उसमें हमने वेलोसिटी जो ली है दैट इज 2v. जब हम 2v वेलोसिटी लेंगे, the the 2 will be squared, and when the 2 is squared, जो हमारे पास फाइनल वैल्यू आएगी ऑफ द काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी 4x. 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल अगर इन्होंने लिखा होता कि इट द स्पीड ऑफ द रॉकेट इंक्रीजेस टू 3v. 3v ये एक सिंपल का लाइक कैलकुलेशन है, आप खुद कैलकुलेट करके बताएं व्हाट वुड द काइनेटिक एनर्जी बी देन. इट वुड बी 9 टाइम्स, इट विल इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 9 बिकॉज 3 का जो स्क्वायर होता है दैट इज 9. So very simple question. Question number 13. A car of mass 1000 kilograms is driven 200 meters up an incline so that it rises 50 meters vertically. The acceleration of free fall g is 10 meters per second square. What is the gain in gravitational potential energy? Gravitational potential energy का हमसे पूछ लिया. Gravitational potential energy के लिए हम कौन सा distance लेते हैं? एक सेकेंड मुझे फॉर्मूला राइट डाउन करने दे. GPE is equals to m into g into h. What is m? M is mass which has been given, which is 1000 kilograms. G हमारे पास भी given है, which is 10. तो the main question lies कि हम कौन सा distance लेंगे. Will we take 200 meters or will we take 50 meters? तो जब भी आप किसी चीज को लिफ्ट करते हो, the GPA is increased. हाउ यू मे आस्क? बिकॉज आप जितना भी एक चीज को ऊपर लेके आते हो, जैसे आपने अपने बॉल को 1 मीटर्स के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, राइट? अगर आप यहाँ हो, आपने बॉल को 1 मीटर्स के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, द बॉल विल हैव रिलेटिवली लेस जीपीई. अगर आप इसको 4 मीटर्स के लेस से डिस्टेंस पे रख लो, 4 मीटर्स के डिस्टेंस पे इट विल हैव मोर जीपीए देन इट हैड व्हेन इट वाज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर्स, राइट? So GPA is the vertical distance. We will take the vertical distance between the object and the, what do you call it, ground level you can say. तो हम इनपुट कर देते हैं 50 meters क्योंकि that is the vertical distance which is gonna come at 500,000. So C is equals to 500,000. Question number 14. A fish is swimming 15 meters below the surface of a lake as shown. The density of the water is 1000 kilograms per meter cube and the atmospheric pressure is 100,000 pascals as usual. The acceleration of the free fall is 10 meters per second square as usual. और what is the total pressure? हमने total pressure on the fish निकालना है, ठीक है ना? तो first of all we have to identify which formula can we use. यही तो मेन चीज होती है कि हमने आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है. हमारे पास प्रेशर के दो फॉर्मूलाज हैं.
राइट। एक हमारे पास है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, द सेकंड वन इज, थिंक अबाउट इट, रो जी एच। प्रेशर इज इक्वल्स टू रो जी एच। रो इज आवर डेंसिटी, जी इज आवर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, एंड एच इज आवर हाइट। ठीक है ना। सो रो जी एच, हमारे पास रो की वैल्यू है 1000, जी की वैल्यू है 10, एंड हाइट की वैल्यू है 50। व्हाट विल वी गेट? 150,000 pascals. And C is the right answer? No, it's not. D is the right answer. Why, you might ask? That is because they have asked the total pressure. The total pressure will be the pressure caused by the water. यहां से यहां तक जो हमने कैलकुलेट किया प्रेशर, दैट इज ओनली द प्रेशर विच इज कॉज्ड बाय द वाटर, क्योंकि हमने उसकी डेंसिटी ली है, हमने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ली है, और हमने उसकी स्पेसिफिक हाइट ली है। बट द कांस्टेंट प्रेशर विच इज एक्टिंग ऑन द फिश इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हमेशा एक्ट कर रहा होता है, so we have to take that into account as well. So add that into the 150,000 that we just calculated, and we will get 250,000 pascals. And this is the right answer. अच्छा जी, द डायग्राम शोज अ मर्करी, मैनोमीटर का क्वेश्चन है, मैनोमीटर का क्वेश्चन है, एंड बी इज द राइट आंसर। दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस, so we do not have to attempt this question. So yeah, let's move on. Question number 16. In a weightlifting contest, an athlete lifts a metal bar of mass 20 kilograms fitted with a mass of 80 kilograms on each end. The lift from ground to a height of 2.5 meters takes zero point 0.5 seconds. So, in order for that athlete to take that mass from ground to a height of 2.5 meters, it takes zero point 0.5 seconds. तो 0.5 seconds में वो एथलीट है, वो मास को उठाता है और इसको 2.5 meters की हाइट पे पहुंचा देता है। The gravitational field strength G is 10 newtons per kilogram. What is the average power that the weightlifter exerts in providing the GPE during this lift? ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द पावर। पावर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेट्स डू अ बिट ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग। पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क डन हम कैसे निकाल सकते हैं इन दिस सिचुएशन, इन दिस स्पेसिफिक सिचुएशन? Work done can be calculated using the formula GPA is equals to MGA. M हमारे पास क्या है in this case what is M? This is a very simple question. M is 80 plus 80 plus 20, which is 180. G हमारे पास कितना है? G is a fixed value which you should remember, which is 10. MGH, H है हमारे पास 2.5. Very easy question. तो 4500 हमारे पास joules जीपी आ जाती है, ठीक है ना। जीपी इज 4500, ठीक है ना। एंड वी हैव टू कैलकुलेट द पावर। तो पावर इज वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, 4500 divided by time, which is zero point 0.5 seconds, because it takes zero point 0.5 seconds for the athlete to lift the weight or the mass, you can say, from ground to a height of 2.5 meters. So we can calculate that, which is 9000 watts. As simple as that. ऐसे क्वेश्चंस में रिवर्स इंजीनियरिंग किया करो, जिसमें ना मल्टीपल फॉर्मूलाज लग रहे होते हैं ना, उसमें यही जरूरी होता है, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17. अ बॉय स्टैंडिंग by the side of a lake. The boy drops a heavy stone from a height of 2 meters above the water surface. The acceleration due to gravity is again 10 meters per second square. What is the speed of the stone when it hits the surface of the water? So first of all, this is a bit of an interesting question. और इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है? इस क्वेश्चन में आ रहा है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, which states energy can neither be created nor destroyed. लेकिन जो एनर्जी होती है इट कैन टर्न फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, ठीक है ना। एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो सकती है। लेट्स अज्यूम यू हैव अ बॉल इन योर हैंड, और उस बॉल को आपने छत से नीचे फेंका है, राइट। छत पे उस बॉल के पास मैक्सिमम जीपीई होएगी, राइट। छत पे उस बॉल के पास मैक्सिमम जीपीई होएगी। व्हाई, यू माइट आस्क? दैट इज बिकॉज जो बॉल है उसके पास एक हाइट है, एंड जीपीई इज मेनली डिपेंडेंट ऑन हाइट। आपको मैं दिखा देता हूँ, एम जी एच मैस इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इंटू एच। हमारे पास जो ओनली थिंग विच इज वेरिएंग इज हाइट, है ना। हाइट चेंज हो सकती है, ना ही उस ऑब्जेक्ट का मास चेंज हो सकता है, ना ही ग्रेविटेशनल
फील्ड स्ट्रेंथ चेंज हो सकती है, राइट? तो हमारी ऑब्जेक्ट की हाइट चेंज हो रही है एंड द mgh or you can say gpe as highest at a point where the height is maximum, ठीक है ना? बट एज यू ड्रॉप दैट आइटम, एज यू ड्रॉप दैट बॉल, जो बॉल होगी दैट विल एक्सेलरेट, है ना? एक्सेलरेट करते 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 नीचे जाके वो हिट हो जाएगी एक सरफेस के साथ। ये मानते हो आप? बॉल को अगर आप एक डिस्टेंस आई मीन एक हाइट से फेंको नीचे, it will accelerate and it will reach a maximum value for velocity. That is exactly what they are asking for. ठीक है ना? तो हमारे पास वैल्यूज जो है दैट कैन गिव अस द mgh and mgh is equals to ke. I mean gp is equals to ke. Why, you might ask? As I told you, due to the principle of conservation of energy, energy can neither be destroyed nor created. Therefore, the energy which has been created by the height will equal to the energy which is created by the velocity. ठीक है ना? So GPE का फॉर्मूला हमारे पास है mgh is equals to 1/2 into m into v square, है ना? m और m तो कट गया, है ना? m और m तो स्ट्रेट अवे कट गया। तो gh is equals to 1/2 v square। g हमारे पास क्या है? g is 10 इंटू हमारे पास h क्या है विच इज 2, और हमारे पास 1/2 है और वेलोसिटी का स्क्वायर। तो हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस विल बी 40 इज इक्वल टू v स्क्वायर। सो लेट्स सी, हम इसका अंडर रूट ले लेंगे। व्हाई, यू माइट आस्क? दैट इज बिकॉज जब एक साइड पे स्क्वायर होता है तो दूसरी साइड पे एक साइड का स्क्वायर हटाने के लिए दूसरी साइड को अंडर रूट लेना पड़ता है। सो द आंसर इज बी। Question number 18. In which situation is energy being released by the fusion of hydrogen nuclei to form helium nuclei? So they're talking about fusion. अब हमने दिमाग में सोचें कि फ्यूजन हमने कहाँ पढ़ी हुई है, फ्यूजन कहाँ होती है? फ्यूजन happens inside the center of a star, ठीक है ना? And if you might be wondering, fission happens inside a nuclear reactor, ठीक है ना? fission nuclear reactor में होती है, फ्यूजन होती है inside a star। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। द डायग्राम शोज अ ब्लॉक being pulled up a slope by a force F. The block reaches the new position at the top of a slope. What is the work done by force F in moving the block to its new position? So they are asking about the expression for work done. Work done की expression मांग रहे हैं। Work done is equals to force into displacement or distance, you can say any, ठीक है ना? Distance या displacement. So let's see. फोर्स हमने F ले लिया, हम डिस्टेंस कौन सा लेंगे? हम डिस्टेंस आर लेंगे, क्यू लेंगे या पी लेंगे? हम लेंगे आर। वाई, यू माइट आस्क? दैट इज बिकॉज जो भी हमने डिस्टेंस लेना होता है इन वर्क डन दैट हैज टू बी पैरेलल टू द फोर्स। फोर्स के जो पैरेलल डिस्टेंस होगा दैट विल बी द डिस्टेंस वी हैव टू टेक। समझ आ गई? एंड इन दिस केस आर इज द राइट आंसर, therefore A is the right answer, ठीक है ना? Question number 20. Which statement about a mercury in glass clinical thermometer that is out of our syllabus? We cannot, like, we do not have to do that. Question number 21. Which description of a black dull surface is correct? जो black surface होती है that is a good absorber, as we know. Black surface is a good absorber. That is a very apparent fact. But some people might not know that black surface is a very good emitter as well as being a good absorber, it is a very good emitter. ठीक है ना? क्योंकि आपने मैं आप बहुत दफा ये कॉमन एग्जांपल देता हूँ, अगर आपके पास एक ब्लैक बस्ता है और आप गर्मी में बाहर निकले, द ब्लैक बस्ता मस्ट बी emitting heat a lot of the times. The black bag is emitting a lot of heat, and it is emitting a lot of heat because it has absorbed a lot of heat, ठीक है ना? So let's see what is our next. तो हमारे पास एमिटर आ गया, एब्जॉर्बर आ गया, ठीक है ना? इसी गुड एमिटर, एक सेकेंड, गुड एब्जॉर्बर, गुड एमिटर एंड इट इज नॉट अ गुड रिफ्लेक्टर, ठीक है ना? इट इज अ पोर रिफ्लेक्टर, ठीक है ना? बिकॉज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट, यू कैन नॉट बी अ गुड एब्जॉर्बर and a good reflector at the same time,
ठीक है ना? It is a poor reflector, good emitter, good absorber, and a poor reflector of radiation. Question number 22. The temperature of a body increases by 1 degree Celsius. Which other quantity also increase? That will be our heat capacity. No. Our internal energy. Yes. Specific heat capacity, specific latent heat. So specific ये A, C and D are not values that change. ठीक है ना? जैसे कि हमारे पास specific heat capacity हो गई. It is the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 kilogram of substance by 1 degree Celsius, or you can say Kelvin as well. ठीक है ना? These are not values that change. So yeah, let's move on. Question number 23. The thermal energy produced by an electric heater in 3 minutes is used to melt wax. The solid wax is initially at its melting point of 60 degrees Celsius. The specific heat of wax is 220 joules per grams. The heater supplies 7700 joules of thermal energy to the wax. The total thermal energy is 7700 joules. The specific latent heat of the wax is 220. Sum of the wax melts. How much wax melts? तो इसके ऊपर हम एक इजी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं विच इज क्यू इज इक्वल टू एम एल. क्यू हमारे पास है द इट इज द हीट एनर्जी. एम हमारे पास निकालने वाला है. एल हमें दिया हुआ है दैट इज 220. तो 7700 डिवाइडेड बाय 220 will be equals to 35. 35 grams of wax melts. Question number 24. Which row explains why a liquid has a fixed volume but does not have a fixed shape? तो ये मैंने एक छोटा सा डायग्राम लिया हुआ है जो हमारे पास forces between the molecules of liquids is relatively large. ठीक है ना? The movement of the molecules in the liquid, they are free to move. Therefore, A is the right answer. Let's move on to the next question. Question number 25. A fixed mass of gas is enclosed in a cylinder by a piston which is free to move. First of all, we can see that the mass is fixed. मतलब एक सिलेंडर के अंदर अगर 5 पार्टिकल्स हैं तो none of the particles will be added और ना ही पार्टिकल्स कम होंगे, ना ही ज्यादा होंगे ना ही कम होंगे. And second of all, the piston is free to move. So depending on certain factors, मतलब जैसे कि हीट हो गया, प्रेशर हो गया, the piston will go up and down. ठीक है? Which combination of changes to the pressure and to the temperature must increase the density of the gas? So first of all, we need to figure out what density is. Density is equals to mass divided by volume. समझ आ गई? But the mass is constant. Mass is constant. So that must mean that the volume is changing. है ना? Volume is changing क्योंकि mass तो हमारा constant है. So the only change in density we can get is by changing the volume. और वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में हमने रिलेशनशिप सेटल करना है सो दैट द डेंसिटी इज एट इट्स हाईएस्ट. ठीक है ना? वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में, प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप. वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. आप लोगों ने काफी दफा पढ़ा होगा वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. आप इसको भी देख सकते हैं, इस डायग्राम को भी देख सकते हैं. इसको हटा दें. अगर आप यहाँ देखें, अगर वॉल्यूम कम किया हुआ है, यू कैन सी अ मच वाइडर रेंज ऑफ पार्टिकल्स इन अ स्मॉल एरिया, और यू कैन से अ स्मॉल वॉल्यूम. और अगर हम वॉल्यूम ज्यादा कर दें, द पार्टिकल्स हैव abundant स्पेस, बहुत ज्यादा स्पेस होती है. तो द प्रेशर इज नॉट द सेम. द प्रेशर इज इंक्रीज वेयर द वॉल्यूम इज लो. तो वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में ये रिलेशनशिप है दैट इफ द वॉल्यूम increases the pressure will decrease, if the volume decreases the pressure will increase. अब वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में हम देखते हैं द रिलेशनशिप. वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच में अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होएगा, whenever our temperature increases, what happens is that the particles will, they will gain kinetic energy. And when the particles gain kinetic energy, just as I told you, according to several factors such as temperature, मतलब कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा. जैसे कि टेम्परेचर हो गया, अगर हमारे पास टेम्परेचर ज्यादा होगा, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा पार्टिकल्स के पास ज्यादा एनर्जी आएगी, और जब पार्टिकल्स के पास ज्यादा एनर्जी आएगी, दे विल
push the piston up. तो as you can see we need decreased temperature, हमें कम टेम्परेचर चाहिए and we need increased pressure. Hopefully you got that. अच्छा आगे चलते हैं. Question number 26. Light enters a glass block at an angle of incidence I and it produces an angle of refraction R in the glass. Several values of I and R are measured and a graph is drawn of sine I against sine R. Which graph is correct? ठीक है ना. First of all, we know that the I is greater than R. I is greater than R. समझ आ गई? So we can assume that the sine I will be greater than sine R in the same amount of, you know, refraction. Sine I will be greater than sine R. We can easily assume that A is the right answer because B और C के अंदर negative gradients हैं और D में हमें दिखाया जा रहा है sine R is bigger than sine I. But one other thing that we can assume is that assume नहीं मतलब हमारे पास फॉर्मूला है उसका sin I divided by sin R is our sin I divided by sin R is our formula for what refractive index. ठीक है ना. refractive index का फॉर्मूला है हमारे पास sin I divided by sin R. ठीक है ना. as we know glass का refractive index 1.5 होता है approximately. समझ आ गई. but this is a very it's not a good way to approach this question. The way I showed you previously is a better way, but इस way से आपको कुछ चीजें पता होना चाहिए that the refractive index of glass is 1.5 approximately. तो yeah, अभी हम देख लेते हैं sin I हमारे पास है 1 और sin R हमारे पास है, इसको नीचे ले जाते हैं ऐसे, approximately 0.6. 0.6. So let's see. 1.6667 is the answer. We can round that up to 1.5. ठीक है ना. अगर हम इसको देखें it would be 0.6 something, right? So this is way better than this. Therefore A is the right answer. Question number 27. A swimming pool is lit by an underwater light. A ray of light is incident on the water surface. यहाँ incident हुई है the ray of light. What is the correct path for the ray of light? तो जब भी आपने रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन का कोई क्वेश्चन करना है उससे पहले आपने एक नॉर्मल बनाना है जरूर. समझ आ गई. एक नॉर्मल बनाना है आपने. तो ये हमने नॉर्मल बना दिया है. नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. जो भी सरफेस होगी वेदर इट इज रिफ्लेक्शन मतलब यहाँ से लाइट आ रही है यहाँ जा रहा है तो हम ये बनाएंगे नॉर्मल विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस विच द रेज रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग ऑन. तो नॉर्मल बना दिया. तो नॉर्मल के बिल्कुल साथ हमारे पास डी जा रहा है विच इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट बिकॉज इट डजंट मेक सेंस. ए भी इनकरेक्ट है दैट डजंट मेक सेंस ईदर बिकॉज यहाँ से रे ऑफ लाइट जाएगी तो यहाँ थोड़ी ना जाएगी. इट विल आदर गो आगे यहाँ इट विल बेंड हियर है ना. सो या लेट्स मूव ऑन टू बी एंड सी. इनके बीच में कोई राइट आंसर है. तो पहली बात आप ये देखें when the light is moving from a denser medium to a rarer medium, what is the change in the angle of refraction? Angle of refraction and angle of incidence के बीच में change क्या है? It seems like the angle of refraction is the ray of refracted ray is moving towards the normal, which is totally absurd. It is not right. ठीक है ना. The ray must move away from the normal. Whenever the light ray goes from a denser medium to a rarer medium, जब भी denser medium से rarer medium right ले जाती है, it moves away from the normal. So it should have gone somewhere around here, है ना? So therefore we can assume that the light is totally internally reflecting. ठीक है ना? तो C is the right answer. और total internal reflection में angle of incidence is equal to the reflected angle. ठीक है. Question number 28. Which diagram shows the action of a converging lens on a parallel beam of ray of light? अच्छा जी. First of all, the middle ray will pass right through. हमेशा जो middle ray होती है from the optical center, whenever a ray is moving through a optical center, the ray will just pass right through. It will not deviate. अच्छा जी. पहले हम देखते हैं A में.
ए में हमें नजर आ रहा है दैट द रेज आर डाइवर्जिंग, रेज डाइवर्ज हो रही है। डाइवर्ज का मतलब होता है अलग होना, कन्वर्ज का मतलब होता है साथ आना, ठीक है ना। तो दिस इज अ कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस मतलब लाइट रेज को साथ आना है, मतलब डी इज द राइट आंसर। इसके अंदर सीधा जा रहा है दैट डिफीट्स द पर्पस ऑफ अ लेंस। लेंस का ये पर्पस होता है कि अगर आपके रेटिना के साथ वो नहीं बन रहा, व्हाट डू यू कॉल इट, इमेज नहीं बन रहा, द रे ऑफ लाइट्स आर नॉट कॉन्सेंट्रेटेड ऑन योर रेटिना, तो आपने उसको रेटिना के पास बनाना है, या आपने लाइट को कन्वर्ज करना है या डाइवर्ज करना है। दिस इज डूइंग नथिंग, ठीक है ना। सो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। दिस इज डाइवर्जिंग द रेस, एंड this is, I don't know, reflecting the rays. So D seems like the most sane option. So yeah, let's move on. Question number 29. What is a feature of red light compared with that of a violet light? Prism deviates red light more. Deviation में अगर आपने देखा हो प्रिज्म के, अगर हम व्हाइट लाइट पास करें, ठीक है ना, a whole spectrum is formed. तो ये हमारे पास आ गया different colors, ठीक है ना. But you know, the red is definitely not deviated more than, what do you call it, violet. Red has a lower frequency, we can say that. Red does have lower frequency, therefore B is the right answer. Question number 30. What is the ratio of the longest sound wavelength audible to a healthy human ear to the shortest? So first of all, let me start off with an analogy. ठीक है ना, analogy से start करते हैं. So as we know, a pretty common formula is V is equals to F into lambda, है ना? V is equals to F lambda, very common formula. So the analogy is that if we take any two pairs of frequency and wavelengths in this graph, I mean in this diagram, जो electromagnetic spectrum को represent करता है, you will get the same value for the velocity. Velocity की same value आएगी, which is 300 million meters per second, right? Seems like a pretty bold claim, but you have heard that the velocity of each and every component of electromagnetic spectrum is the same, which is 300 million meters per second. Same होती है 300 million meters per second, and you can prove that by taking any two values of wavelength and frequency. जैसे मैंने ले लिया 10 meters and 30 megahertz. Velocity is equals to 10 meters. एक सेकंड रुक जाओ, पहले हम frequency लिख लेते हैं, which is 30 megahertz. 30 megahertz is like 30 million multiplied by 10 meters. That would be 300 million meters per second. है ना? So yeah, you can do that with every single component and you'll still get the same value. So according to this, we can assume that V is equals to F lambda. Therefore, V is equals to V and F lambda is equals to F lambda. है ना? F lambda. लेकिन अगर हमने इनको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना है, we can write F1 lambda, F1 lambda 1 and F2 lambda 2, है ना? F1 lambda 1, F2 lambda 2, और इधर हम कर देते हैं F1 divided by F2 is equals to lambda 2 divided by lambda 1. समझ आ गई? So we can also see a inversely proportional relationship between the two values. अगर एक चीज ज्यादा होगी तो दूसरी चीज कम होगी, दूसरी चीज ज्यादा होगी तो पहली चीज कम होगी. As you can see, as the wavelength increases, the frequency decreases. Frequency पहले शुरू हुई थी 3 into 10 raised to the power of 21 से, एंड हुई है 300,000 हर्ट्ज पे, और वेवलेंथ शुरू हुआ था 10 माइनस 13 की पावर से, और खत्म हुआ है 1 किलोमीटर पे. So that means के they are inversely proportional. You can simply derive that, like, off of your knowledge, ना कि आप इतनी ज्यादा वर्किंग करो, क्योंकि कुछ लाइक बच्चे होते हैं जिनको समझ आ जाती. So yeah, F1 divided by F2 is equals to lambda 2 divided by lambda 1. So as we know that the audible range for human ears is 20,000 to 20 hertz. ठीक है ना? So simple terms में लिख दे, that could be 1000. ठीक है ना, या 1 to 1000 कर लेते हैं, 1 to 1000.
क्योंकि स्मॉलेस्ट वैल्यू से लार्जेस्ट वैल्यू तक जा रहे हैं। 1 to 1000 कर लेते हैं। 1 to 1000। अगर हम F1 में 1 लिखते हैं डिवाइडेड बाय F2 में लिख दे 1000, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो F2 लैम्डा 2 होगा, दैट शुड बी द हाईएस्ट वेवलेंथ, और जो लैम्डा 1 होगा दैट शुड बी द लोएस्ट वेवलेंथ, है ना। लैम्डा 2 हाईएस्ट वेवलेंथ होगा, लैम्डा 1 लोएस्ट वेवलेंथ होगा। So yeah, we can also inverse this, like straight away we can inverse this by doing 1000 to 1, ठीक है ना। So that is our answer, which is B. Hopefully you understood that. अगर आपको नहीं समझ आई, you can ask me in the comment section. You're free to ask and I will surely answer. Ultrasound is used to clean jewelry in a liquid. What is an other use of ultrasound? Ultrasound के mainly 3 uses हमें बताए जाते हैं in our syllabus. First is prenatal scanning. मतलब जो अल्ट्रासाउंड आप खुद करवाने जाते हैं, मतलब अपने बच्चे का करवाने जाते हैं, अगर कोई प्रेग्नेंट है औरत, आप अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं जस्ट टू इंश्योर दैट दैट औरत इज प्रेग्नेंट, या आपने बच्चा जाया करवाना है, या यू कैन डू एनी दैट। एंड क्लीनिंग, क्लीनिंग एक सेकंड चीज है। यू कैन क्लीन, क्या कहते हैं उसे, ज्वेलरी क्लीन कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड यू कैन ऑल्सो डू क्वालिटी कंट्रोल। यू कैन सी, यू कैन डिटेक्ट क्रैक्स। समझ आ गई, क्रैक्स आप डिटेक्ट कर सकते हैं। सो इनमें से 3 हमें ऑप्शंस दी हुई हैं। 3 ऑप्शंस में प्रीनेटल स्कैनिंग इज द मोस्ट attractive one. Question number 32. Bar magnets and various non-magnetic and demagnetized metal bars are placed in different arrangements, shown in which arrangement do the bars repel. Repel किसमें होंगे? Repel होंगे. The only repulsion that can ever happen between magnets is the repulsion between two like poles. जब भी poles एक जैसे होंगे, मतलब नॉर्थ नॉर्थ के साथ होएगा या साउथ साउथ के साथ होएगा, द magnets will repel. So we can see D is the right answer. Let's move on to the next question. Question number 33. There is a varying current in the coil of the loudspeaker shown. The loudspeaker is producing a sound. The magnet is clamped. What is vibrating to produce the sound? So vibration से sound waves produce होती हैं. Let's start off from the basics. जो कॉइल है ना, उसके थ्रू एक इलेक्ट्रिक करंट पास होएगा। इलेक्ट्रिक करंट पास होएगा थ्रू द कॉइल, and when electric current is passed through the coil creates a magnetic field. And as we know, हमारे मैग्नेट के पास भी एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब हमारे कॉइल के पास भी एक मैग्नेटिक फील्ड आ गई। एंड व्हेन दीज टू मैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं, these two magnetic fields interact, the coil moves back and forth. जो कॉइल होता है that starts to move, and ड्यू टू द कॉइल बीइंग अटैच्ड टू द कोन, कॉइल और आप देख सकते हैं जो कोन है, दीज आर टू अटैच्ड कंपोनेंट्स। ड्यू टू दीज बीइंग अटैच्ड, व्हेन द कॉइल मूव्स बैक एंड फोर्थ, सो विल द कोन, ठीक है ना। एंड व्हेन बोथ ऑफ दीज मूव, दे विल क्रिएट वाइब्रेशंस, देयरफॉर क्रिएटिंग अ साउंड। So let me, phrase it out for you. Firstly, current passes through, what do you call it, the coil. Coil creates magnetic field. Thirdly, what will happen is that what will happen? The coil's magnetic field will interact with the magnetic field of the magnet. This will cause the coil to vibrate back and forth, and so will the cone. Cone will vibrate with the coil. Therefore, cone and coil both are creating the vibrations. Let's move on to the next question. Question number 34. Two isolated and uncharged metal spheres, X and Y, are touching. So, they can change charges. A positively charged rod is held near X and then spheres are moved apart. The spheres are moved apart. पहले आपने दो spheres को इकट्ठा किया है, उनके पास आप एक रॉड लाए हो,
which is positively charged. X now has a negative charge. What is the charge on Y? अच्छा जी, मैं आपको ये भी समझा देता हूँ. Why does X have the negative charge? That is because जो positively charged particles हैं उनसे negatively charged particles attract होंगे, है ना? तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स सारे एक्स पे आ गए और सारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स वाई पे रह गए हैं. सो लेट्स सी. ए नेगेटिव एंड अच्छा चार्ज ऑन वाई बताना है हमने. नेगेटिव एंड स्मॉलर देन दैट ऑफ एक्स. एब्सोल्युटली रॉन्ग. अच्छे जी. बी नेगेटिव एंड स्मॉल सेम साइज as that on x. I will agree that the size is same but it is positive. ठीक है ना? Positively charged. So positively charged is either C or D. The size is smaller or the size is the same. The size is the same. Why you might ask? जो समझदार बच्चे होंगे उनको आ गया होगा. But for you guys, for the normal people, I will tell you that the the what do you call it? The spheres are uncharged. Therefore, it means that they have the same amount of positive particles and the same amount of negative particles. जब भी आपको बोलेंगे an object is uncharged, that will mean that the amount of positive particles are equal to the amount of negative particles. ठीक है ना? So therefore, D is the right answer. And we're on to the next question. Question number 36. A battery consists of three identical cells in parallel. तो ये याद रखना है. The cells are in parallel. What is the unit of electromotive force and what is the EMF of the battery equal? First of all, जो हमारे पास EMF का unit होता है, EMF is equals to work done divided by charge. Work done divided by charge. अब इन दोनों का हमारे पास यूनिट पता है. वर्क डन का यूनिट क्या होता है? यूनिट होता है वर्क डन का J, which is joules. और चार्ज का क्या होता है? It is C, which is coulombs. So that is the unit. So it's either A or B. अच्छा जी. Secondly, what is the EMF equal to? जो EMF होता है ना in series, the EMF adds, while in parallel, the EMF stays what? Constant. आपको मैं ये डायग्राम से पोर्ट्रे करके दिखाता हूँ. आप ये देख सकते हैं कि पैरेलल में 1 2 3 4 वो लगे हुए हैं, सेल्स लगे हुए, एंड ईच ऑफ देम आर 2 volts. और यही सेल्स सीरीज में लगे हुए हैं. दैट शोज सीरीज में ऐड होते हैं, और जो पैरेलल में होते हैं दोज आर obviously what stays the same. So therefore, we're only gonna take the EMF of one of the cells. So B is the right answer. Question number 37. The nuclide notation for an isotope of X is AZ. A is representing what? A is representing the mass, or we can say the atomic mass. Atomic mass. And our Z is representing the atomic number. एटॉमिक नंबर एक और तरीका होता है बोलने के लिए प्रोटॉन्स, और एटॉमिक मास इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ठीक है ना? तो अगर हम प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, अच्छा हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर इन द न्यूक्लियस, हमने न्यूट्रॉन्स बताना है कि कितने न्यूट्रॉन्स हैं इन द न्यूक्लियस. तो हमारे पास प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स है और हमारे पास खाली प्रोटॉन्स है. If we just subtract the protons from the atomic mass, what will happen is that we'll get the neutrons. And that is done by subtracting A from Z. ठीक है ना? Therefore, B is the right answer. Question number 38. Radioactivity is used in several activities that takes place in a hospital. Which activity never uses radioactivity? So, diagnosing illnesses, that is correct. स्टेरलाइजिंग इक्विपमेंट करेक्ट. ट्रीटिंग इलनेसेस, काफी ज्यादा हमने इन तीनों की एग्जांपल्स की भी हैं. ठीक है ना? तो आपको ये दिमाग में बैठा होना चाहिए. So let's move on to the next one. Question number 39. 614 carbon is a natural radioactive isotope of carbon and is present in all living things. It has an half-life of 5700 years. How old is a bone that is found to have 1/4 of the natural process of 614 carbon?
तो इसके लिए एक बहुत आसान फॉर्मूला होता है। आपको मैंने काफी दफा बताया हुआ है। हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है? द नंबर ऑफ हाफ्स इज इक्वल्स टू टाइम divided by half life. Total time period है and this is the half life and this is the number of halves. How can we calculate even one of them? हमारे पास टाइम तो है, टाइम की जगह हम लिख देते हैं आराम से 5700। नहीं नहीं नहीं, टाइम हमने निकालना है, टाइम नहीं है हमारे पास हाफ लाइफ है। सॉरी फॉर दैट। हाफ लाइफ है 5700। 5700 हमने नंबर ऑफ हाफ निकालने हैं बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम। नंबर ऑफ हाफ कैसे निकालेंगे? इट लाइज हियर इन दिस लिटिल क्लू। बिकॉज दे हैव टोल्ड अस कि हमारे पास जो है व्हाट डू यू कॉल इट, द बोन, फॉर एग्जांपल दिस इज अ बोन। व्हाट इज द हाफ लाइफ? हाफ लाइफ के बाद, एक हाफ लाइफ के बाद हाफ ऑफ इट इज रिमेनिंग, और दूसरी हाफ लाइफ के बाद वन फोर्थ ऑफ इट इज रिमेनिंग। ठीक है ना? सो अगर हमने सीधी सीधी कैलकुलेशंस करनी हो तो वी कैन जस्ट मल्टीप्लाई 1 divided by 4 by 2, we'll get 0.5, and if you multiply that by 2 we'll get 1, and that is what we're looking for. So कितनी दफा हमने 1 by 4 को डबल किया, कितनी दफा हमने 1 by 4 को मल्टीप्लाई बाय 2 किया? दैट वुड बी 2 टाइम्स। तो हम नंबर ऑफ हाफ्स की जगह लिख देते हैं 2, और 5700 into 2 is 11400 years, and that is the time period. अगर आपको समझ नहीं आई, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है ना? फॉर एग्जांपल यू हैव दिस एलिमेंट, ठीक है ना? इस एलिमेंट की जो हाफ लाइफ है दैट इज 5700 ईयर्स। तो मतलब 5700 ईयर्स के बाद दिस विल बी लेफ्ट, आधा रह जाएगा। मतलब पहले अगर ओरिजिनली 1 kg का था, अगर ओरिजिनली 1 kg का था, अब रह जाएगा 0.5 किलोग्राम्स, और उसके बाद ये फिर से 5700 ईयर्स गुजर गए हैं। तो अब कितना रह जाएगा? दैट वुड बी 0.25। अगर हमें उसने उसका ओरिजिनल वेट बताया हुआ है एंड ही हैज टोल्ड अस व्हाट इज द टाइम पीरियड, हम इसको ओरिजिनली किस पे लेके जाएंगे? 1 किलोग्राम पे, विच विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2, विच विल बी 0.5। फिर से हम इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, विच विल गिव अस द आंसर विच इज 1। समझ आ गई? दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40। A kettle is connected to 240 volts main supply using a plug containing a 13 ampere fuse. The kettle contains water. When it is switched on, the fuse blows. This happens again after a new fuse is fitted. Someone replaces the fuse with a nail and the kettle works. What else might happen as a result of replacing the fuse with a nail? First of all, हमारा fuse क्यों लगा होता है? The fuse acts as a safety mechanism, लिखने की जरूरत नहीं है। The fuse acts as a safety mechanism as if the, what do you call it, the current is above the rating, है ना? अगर रेटिंग से above है करंट, what happens is that the fuse blows, और जब दो दफा फ्यूज ब्लो हुआ है that means that the current which is coming is way above the, what do you call it, the limit, है ना? तो अगर आप उसको सिंपली अपने टोटके से रिप्लेस कर दोगे, व्हाट विल हैपन इज दैट इट विल क्रिएट फर्दर कॉम्प्लिकेशंस। मतलब अगर एक बंदा बीमार है और उसको आप अपनी तरफ से ही दवाइयां देना शुरू कर दो, अपने घर के टोटके यूज करना शुरू कर दो, तो ही प्रोबेबली गेट मोर सिक। तो अगर आप एक मशीन रन कर रही है एंड इट इज टेलिंग दैट समथिंग इज रॉन्ग, तो यू नीड टू लुक इनटू दैट कंपोनेंट कि व्हाई इज दिस कंपोनेंट ब्रेकिंग अगेन एंड अगेन। ठीक है ना? तो हम देख लेते हैं the answer. The answer is a very large current overloads the wiring, causing a fire. That is absolutely correct. As I told you, whenever the current is going above the rating of the fuse, the, what do you call it, the fuse blows. Therefore, A is the right answer. So that is gonna be it for our video. And this paper, I don't remember what paper this was. It says May June 2020 paper 1-1. Make sure to check out our topical past paper videos and make sure to pray your prayers.
Have a great day and have a blessed night. Good night.